Hello, good afternoon, and welcome back to the final session of today's trading day. I'm Stock Guru and welcome to the very dedicated channel of index trading. तो सुबह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है. एज यू कैन सी मार्केट बहुत फ्लैट है और अगर आप फर्स्ट सेशन भी आपने देखा होगा कोई इतनी साइडवेज मार्केट थी कि एक भी इंडेक्स रिलेटेड मूव्स नहीं आए. इस समय डेफिनेटली थोड़ी वीकनेस की तरफ मार्केट दिख रही है बिकॉज निफ्टी को 17,400 का लेवल टूटते हुए जो उसका लो है वो उसने ऑलमोस्ट 1 बजे हासिल किया. उसके बाद वापस वो ऊपर आए, लेकिन अभी देखिए 2 बजे के बाद थोड़ा सा गिरावट आ रहा है. इनफैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स का भी यही हाल है, फ्लैटिश टू रेड जाने की तैयारी है. तो लगता नहीं है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ सोच रही है. एंड बीइंग ए वीकेंड तो chances of it falling is more now. So ऐसे में among the two, if I see carefully, तो it is Nifty जो सुबह से ही मैंने आपको बोला है वीक है. जो साइमल्टेनियस दोनों को देखते हुए हमको डिसाइड करना होता है कि विच इज द वन विच कैन फॉल और राइज मोर. ओके, तो इस समय इफ यू सी ऑल HDFC ग्रुप along with Reliance and Kotak, there are certain big companies which are red. Bajaj Group is also there in that. Okay, और अपसाइड में इट्स निफ्टी, इनफी, भारती primarily along with SBI, TCS. तो 17,400 का पुट जो है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए फिलहाल. And live option chain is in front of you. Stream getting sponsored by Dhan app. And I would suggest you open it an account free of cost. बहुत बढ़िया है, मैंने खुद इस्तेमाल किया. ट्रेडिंग के साथ इनका टाई अप है तो they want to do a lot of analysis. Okay, coming back to this, क्या 17,400 का पुट एक सक्सेसफुल ट्रेड साबित हो सकता है? वेल, अगर वो एक तो मैं देख रहा हूँ इसका डेटा का, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल है कि 140 के ऊपर इसको मेंटेन रखना पड़ेगा अपने आप को. तो देन इफ निफ्टी फॉल्स अगेन बिलो 17,400, देयर कुड बी अ सिनेरियो फॉर इट. रिलायंस वीक है सुबह से. Let's see how it shapes up. And as far as बैंक निफ्टी is concerned, 38,000 लेवल के नीचे की तरफ जाना will show its more weakness. Okay, यहाँ पे HDFC is down और कोटक जिसके साथ ही डाउन है, बट ICICI and SBI are holding up along with Axis. So चेन तेज, यहाँ तक कोई वन वे अप्रोच नहीं बोल सकते आ सकती है. जो 17,400 फुट की भी मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक्चुअली देखा जाए नॉट अ गारंटीड ट्रेड विच कैन डू वेल एक्चुअली. यहाँ पे देखिए इतना यहाँ पे क्लटरिंग है. यू फील एवरी time it's going to move up, it's not going to sustain there. Okay, टिपिकल 2.5 बजे के बाद के मूव की वेट करनी पड़ेगी अब तो.
मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, बट एक बात सुबह से लगातार 2 दिन एक अजीब सी इंडेक्स ट्रेडिंग मार्केट है ये, जिसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत टफ है। आज तो ऑनेस्टली एक बार भी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। कल तो फिर भी सेकंड हाफ में जब मार्केट रिवर्स करने लग गई थी तो आ गई थी, एंड इट वाज द केस, बट टुडे इट्स नॉट द केस। आज इतनी ज़्यादा फ्लैट मार्केट है यार। रेपो रेट, आरबीआई पॉलिसी के डिक्लेरेशन के बाद से कुछ भी नहीं होना अपने आप में एक मेरे लिए समझ से परे है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आप कभी भी पुराना डेटा उठा के देखोगे तो जब भी कोई पॉलिसी डिक्लेरेशन आरबीआई करता है तो देयर इज ऑलवेज एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। बट यहाँ पे वी आर सीइंग इन एक्सट्रीम केस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर in FNO segment green 125 है, but still thing is like 1 second. So the thing is that बहुत फ्लैटिश मार्केट है। 17,400 टूट नहीं रहा है, वहाँ पर 38,150 पार नहीं हुआ है, ना डे हाई पार हुआ है ना डे लो गया है नीचे। ऐसे में बहुत मुश्किल है ये तय कर पाना कि एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाह रही है आज। So the only two things are possible in case of Nifty, अपना डे लो तोड़ दे या डे हाई तोड़ दे, then there is some scope in that, and that's exactly what is going to be applicable in case of Bank Nifty also, because ये सेटअप तो उसी तरह है कि अगर इसने 37,800 को तोड़ दिया तो ये गिर सकता है, can reach to 37,700 to 37,750 looks like a support area for it, and in case of Nifty it's again I don't know, 17,350 17,380 यही रेंज है जहाँ इसको एक सपोर्ट की मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइड ऑन मार्केट है, किसी किस्म का कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएशन हो नहीं रहा है। और जिस तरह से इंडेक्स डिवाइड हो रखा है उसमें भी तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बस यू केयरफुली सी दिस। यहाँ पर यू हैव गॉट 27 टू द राइट, 27 ग्रीन्स एंड 23 रेड। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में ये तय कर पाना किस तरफ मार्केट का रुझान होगा। तो वेट एंड वॉच, बहुत पेशेंस चेक करने वाला दिन है। पुट का ट्रेड अगर निफ्टी में दिखता है वो तो क्लियरली 17,400 का पुट ही है। ये देखिए अभी बात करते करते देर इज a movement which is happened in एक आइडियल ट्रेड को लेने की जो जगह बनती है कि आसमी वो 150 के ऊपर होनी चाहिए। मैंने 140 के ऊपर आपको एक बताया है इसके बारे में। 17,400 पुट seemingly looking stronger compared to the 17,500 call as market is falling below 17,400। ओके, तो लॉजिक के साथ बता रहा हूँ।
17,350 को अगर ये मार्केट तोड़ती है तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि वीकनेस बढ़ती हुई सत्रह चार सौ की पुट जो है ये एक ट्रेड बन सकता है आगे चल के 180 200 तक भी जा सकता है अगर गिरावट जोर से आई। ओके, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी इज नाउ heading towards its day low, so there is a steep fall happening. Finally some action, a visible action is seen now in an option trade. देखिए, आइडियलिस्टिकली 17,400 का पुट चल सकता है बिकॉज डे लो की तरफ मार्केट बड़ी है बड़ी तेजी से। And as I say, it's rising because I was watching it very carefully. And it remains to be seen कि ये कितना नीचे तक निफ्टी जा सकता है यहाँ से। Okay. So when we started discussing it, it was around 140. It went to 156 now. You can see I'm not using any technical indicator. It's just the data which you have to read it. अगर निफ्टी 17,350 के नीचे जाता है तो ये 180 के ऊपर पक्का जाएगा। ये वाला ट्रेड आप याद रखिए। कुछ ना कुछ हलचल अब होने की कोशिश, बिकॉज इतने लो से वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश में लगा तो हुआ है। You can see there 17,400 put is what we are discussing here. So Nifty meanwhile has touched 17,366 as the new low and try to recover from there. Okay. बैंक निफ्टी को मैं इतना टच ऑन नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी गिरावट आई है। So certainly there is been a weakness seen now after on the whole day of hold, and the reason being the world market, American futures are very flattish and Europe is red. ये सब क्लूज होते हैं जिससे आपको इंटरप्रेट करना होता है मार्केट। सो जब मैं आपको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, आई एम विद ऑल ऑनेस्टी ट्राइंग टू टीच यू आल्सो ऑन ए डे टू डे बेसिस। ओके, जैसे मैंने बोला है कि लास्ट 1 आवर एंड फर्स्ट 1 आवर आर द टू पीरियड्स, एंड इफ समडे द फर्स्ट 1 आवर इज नॉट रिएक्टिंग और डूइंग एनीथिंग, देन it's a tough day because you will have to take a note of the screen. So the interface which you are seeing right now is
Dhan app. It's a wonderful interface, and I would strongly recommend for it. Uh, they open the account within a span of 24 hours, and they've got a tie-up with Trading View. So all these graphs you are seeing is of Trading View, which are many salient features which are chargeable in the Trading View. May not be charging anything here. It's all free of cost, and account opening is also free of cost. So do try the app. uh, I get a wonderful experience out of it. Okay, तो बात करते हैं 17400 पुट की. So the reason why I'm given this one is because 17500 call area, you are finding it a little tough from there on for the market to move with the help of option chain data also, जहाँ पे you could have analyzed that there is a call writing of around 70 lakhs and they have stood very firm, and the put writers which are around 50 lakhs are they got a little back because 17,400 को इसने तोड़ा है, तो 50 लाख का पुट राइटर को पीछे किया है टाइम बीइंग. ओके, and will the trade really work? Like, seems to be seen. बहुत tough day है, this very tough day. It's not a clean day. So real tough day, but the only logical trade, because among the two strikes, visibly I've seen 17,500 getting reduced, but now then again it is coming back. This 17,400 put rather reversing back. So very tough day actually. It's not giving any breather. जब लगता है कि मार्केट एक नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, because across the world a little of weakness is seen, and being a weekend, people have a tendency of not carrying a trade because it's pretty risky nowadays. So what they do is to try to square it off. So it's back to the old levels, 17,400 put, because Nifty is trying very hard to regain 17,400. तो ये OI जो आपके सामने चल रहा है, OI chain slide, and this is pretty helpful because यहाँ you tend to know which strike has the maximum volume and what is the OI changes happening in it. Okay, so it looks like a lot of figures are reflecting, but the one which needs to be seen. And you need not be seeing just everything which is reflecting. Okay, तो ये आपको आएगा जब when you get yourself experienced day in day out in this, and without practice nothing is going to happen. Multi-dimensional approach is needed. यहाँ पर you have to see which data is interpreting what. आप एक ही टाइम पे आपको बहुत एजाइल होना पड़ेगा. इनफैक्ट अगर मैं कह सकूँ तो you see निफ्टी again the thing is 26 green and 24 red, तो थोड़ा और वीकनेस, मुझे तो वीकनेस दिख रहा है. I mean, unless it try to cover itself up by reversing. तो इसका चार्ट हम ऐसे खोल के देख लेते हैं. बाय द वे, that's the chart of it. It did went up till 159 actually, then on it reversed back. So what I'm trying to tell in this stream is मोटा मोटा वीकनेस है, फ्लैटिश है, ठीक पूरी तरह से नहीं कहोगे, लेकिन इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट गिरना शुरू हुई है. एंड क्या वो ज़्यादा गिरेगी या नहीं, दैट नीड्स टू बी सीन, या उसी गिरावट को बचा लिया जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन.
Looks like Nifty trying very hard to regain 17,400 area. Both the indices are trying hard to regain the little of loss, whatever occurred post 2 o'clock. Main case is like since morning I'm harping on one fact कि जो Reliance side is weak, then HDFC group is there. So major weightage constituents are on the right side. But market and anything is possible here. देखिए, if you put up a SL which can be recovered as a loss, that till then it's fine. You cannot put a deeper SL, then it becomes very tough for you to regain it because intensity or human psychology is that the case whenever is there in your direction, you tend to book it very fast. तो क्या करते हैं हम लोग कि हमारी डायरेक्शन में जब ट्रेड होता है तो हम बहुत जल्दी क्या उत्साहित हो जाते हैं और उसको जल्दी बुक आउट हो जाते हैं, लेकिन जब ट्रेड हमारी डायरेक्शन में नहीं होता तो वी हैव ए टेंडेंसी ऑफ वेटिंग एंड वेटिंग। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी डे ट्रेडर की। ये इतनी साइकोलॉजिकल है देन एनी टेक्निकल। दिस मोर ऑफ ए माइंड सेट। दिमाग में हमेशा आता है कि अरे नहीं नहीं यार हमारा लॉस कैसे हो सकता है, ये ज़रूर रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा रुक जाते हैं। वो सोच की वजह से क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट many a times you tend to book 30 point loss, but if you're booking only 15-20 points profit, to that balancing act doesn't occur. For that then you need to keep your accuracy such to an extent of 90%, which becomes further impossible. मतलब 10 में से आप 8 बार सही होना पड़ेगा उसमें आपको, सो दैट 2 बार जब आप गलत हो और आपने ज़्यादा एसएल कटवा लिया तो वो मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे यू टू बी वेरी रियलिस्टिक कि अगर ट्रेड आपने एक लेने की सोची है एक एक पर्टिकुलर लेवल पे और इट्स नॉट फेचिंग यू, सो यू बेटर resign to the fact कि okay, what I thought is not happening. So the first and the foremost thing what one can do is कि भाई ठीक है, I am going to book it out at this XYZ loss. Okay, that is the only way out. बाकी कोई there is no other way. आप ओपन एंडेड तरीके से ट्रेड लोगे and you don't feel like keeping a stop loss just because you feel कि नहीं you are very sure on it. I don't think that works. Index trading में तो rarely works because every opportunity is such that it needs a lot of control. पूरा दिन आप बैठे हो, आपको ऑब्वियसली बहुत ये लगेगा कि यार ये क्या है। अब हर एक को चाहिए कि इंस्टेंटली पैसा मिल जाए, नहीं होता है, हर दिन तो नहीं होता है। सम डेज आर देयर व्हेन यू जस्ट बाय एनीथिंग एंड इट वर्क्स योर वे, डेफिनेटली, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये माइंड इट्स मैं जो इतना स्ट्रीम में बताने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया भर के टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या फिनेंशियल टर्म्स को नहीं आपने, आपको इसका कॉमन सेंस, बिकॉज यहाँ ऐसे ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर, जो तो पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा। तो हाउ विल यू प्रूव दैट लॉजिक ऑफ हाई एंड नॉलेज, बुक नॉलेज जिसको बोलते हैं, या सम इंडिकेटर बेस्ड नॉलेज नहीं चलती है। समटाइम क्या होता है, योर कन्विक्शन वर्क्स, आपकी कन्विक्शन ज़्यादा वर्क करती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा आप देखोगे कि भाई अब जैसे मैंने इसको जब आइडेंटिफाई किया तो एक दो चीज़ें देख ली, लाइक व्हाट आई एम पिचिंग, यानी मैं किस पे बेट कर रहा हूँ कि भाई ये यूरोप की मार्केट आपके सामने है, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम अलॉन्ग विद यूएस फ्यूचर्स, तो दे आर साउंडिंग वीक। तो जो फैक्ट है ना वही है ना, वो तो इट्स नॉट मेड अप बाय मी। वो एक पॉइंट हो गया। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स companies which constitutes Nifty, you need to see which are on the red side and which are on the green side, and accordingly you need to be also knowing कि weightage wise which has what kind of a weightage। ये सब चीज़ों से आपको ज़्यादा फील आएगा कि ओके व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वेरी इलॉजिकल। एंड सेकेंडली ओवाई डेटा आल्सो सजेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, ओवाई बिल्डअप कहाँ हो रहा है। तो नाउ इफ यू सी
So let's say we are here, okay, 17. देखो again it's moved up, okay, around the 155 area, okay. So surely it tried itself to move up, but then again it's been pushed back, है ना. इतना तो समझ आ ही रहा होगा आराम से आपको. 17,500 का यू सी दिस इज अ ओवर बिल्डअप. ये 70 लाख से सडन 1.5 लाख का और दिस ऑल बिल्डअप. जब बढ़ना है उसको बिल्डअप बोलेंगे, राइट. अदरवाइज अनवाइंडिंग बोलते हैं अदरवाइज. तो यहाँ पे 17,500 नाउ इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फॉर निफ्टी इन सिंपल और इजी टर्म्स में अगर इसको देखा जाए तो देखना यही है कि 17,400 जो था, देखिए वहाँ पे भी उसने स्टीम लूज कर दी है. हम अभी 17,400 से नीचे चल रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया लॉजिकल है वो 17,300 ही आता है. उसके बीच में जो 17,350 है तो वहाँ पे इतना कुछ है नहीं सपोर्ट. 15,44,000 की ओ आई. ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम है ये आपको समझना है ऑप्शन चेन से. तो ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं विच आर ओपन and on the put and the call side they majorly gives you a clear indication on where and what kind of a support or resistance is getting builded up, okay. So you see that this trade now is fast moving up, okay. So market, when a put trade moves up, obviously market is feeling the heat. और जैसे ही मैंने बोला आपको, अगर ये 17,350 तोड़ता है तो आपका ट्रेड के बहुत हाई पोटेंशियल चांसेस बनते हैं टू रीच एट 180 and above. So you see it's reached around 168 now. So the trade which I sort of discussed with you is doing its job. So very much what I'm trying to explain is happening in front of you, okay. So nearing 16170. So you just need to see तो the lower low is 7348 इसने बनाया है. We can see it. So it went till how much it went. It gave you an opportunity of what, around 170 points. 170 तक गया ही था, वही मैंने I had put up a raw estimation of 180, but that was subjective to it reaching and staying there for a while. तो ये हुआ तो वही almost near about हो गया. तो I hope you understood what I tried to explain in this part of my stream and in the second half, which was widely clear. कि क्या देख के क्या समझ में आता है, how you do it. So like I had chosen this because let me try and now explain why I and how I did this. Yeah, shortlisted it because in this entire option chain you need to analyze few things like where is the maximum volume building up at which strike price. So like in this case it was 17,500 which was having like 9.3 lakh odd volumes, and the second best volume was around 9.5 lakh in uh, 93. I don't know वो वॉल्यूम का जरा फिगर्स मेरे को थोड़ा सा I need to refresh myself whether it is 9 lakh or it is 9 crore, maybe like that. तो highest वॉल्यूम जहाँ पर है वो देख के यू डिसाइड फर्स्ट विच स्ट्राइक प्राइस यू आर शॉर्टलिस्टिंग ऑन बोथ द साइड. फिर उसके बाद यू नीड टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ एल टी पी मूवमेंट्स आर हैपनिंग, and most importantly the constituents of that very strike nifty case में like
how the picture built up. Like in this case, I told you Reliance and HDFC Group carry a weightage, and besides, US and European markets are sounding weak, and we are in the, remember, weekend. So weekend may it becomes tough to carry a trade. It is extremely risky. So squaring off is evident now. In this case, you could see that that again that market is going down only. वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश में है. तो I hope I could explain you the best possible way I can. चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए. मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ बेल आइकन जरूर दबाओ, बिकॉज वेन एवर आई डू ए स्ट्रीम यू विल गेट ए नोटिफिकेशन एंड विल नेवर मिस these learning and earning opportunities which are pretty free of cost right now. The interface is of Dhan app. I would strongly recommend to open an account with them. I've provided all the links, and they are very fast on account opening. I must say less than 24 hours it takes them to open account for you. KYC process hard, it's so easy, and you need not pay any money for getting yourself opening an account here. Okay. So where are we now? Okay. तो देखिए मैं जैसा कि मैंने कहा कि अपना जो लोअर लो है, निफ्टी की बात करूँ, मैं बैंक निफ्टी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज कंपैरेटिवली निफ्टी वीक है बैंक निफ्टी के मुकाबले में. ये आप सोच के रखना बात. ओके. विच इज़ वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट 17,400 to trade the way it went and the way I assumed it to, but still it's now 230. तो अभी एक डिसाइसिव मूव आना चाहिए. यहाँ से लेके 3 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है. इट कैन गो आइदर वे. So the only way out in this kind of trades are, so yeah, any kind of trade is when the trade is above your buy area uh, and it is settling at that buy area, you try to bring your stop loss towards your buy area. Safety is must, because sudden volatility may give you losses. देखो फॉर्मूले वही हैं. आप किसी भी ट्रेनिंग में चले जाओ, किसी भी सेशंस में चले जाओ, किसी भी स्ट्रीम्स में अप्लाई करना और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना इज द ओनली वे आउट टू अर्न फ्रॉम दिस मार्केट. ओके. मैं इंडेक्स ट्रेडिंग में अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. मैं बिल्कुल और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. इसमें इससे ज़्यादा कोई अलग कुछ कोई बोल रहा होगा तो आई हैव नो क्लू ऑन दैट. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टीचिंग पीपल, डूइंग माई सेल्फ इन मैनी ईयर्स, एंड दिस हैज़ बीन प्रीटी सक्सेसफुल. आप ट्रेड देखिए. जब ये आप ट्रेड आइडेंटिफाई किया है 2 बजे से, आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ये एक बहुत ही गलत ट्रेड चुन लिया गया. नो, बिकॉज आपने ध्यान अगर नहीं दिया तो इसके नीचे ही मैंने कॉल का ट्रेड नोइंगली रखा है, जस्ट टू सी इफ देर इज एनी रिवाइवल इन दिस, तो विच इज नॉट हैपनिंग. सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स. इंडिया विक्स जस्ट टू नो वेदर द वॉलिटिलिटी इज इन व्हाट एरिया, क्या किस तरह की चल रही है. तो वो 20 के ऊपर अगर वॉलिटिलिटी जाएगी तो फिर सडनली दोनों तरफ के मूव्स बहुत तेज़ी से आते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. राइट. ये आप रख सकते हो 1-2 बार एंड जस्ट टू अनक्लटर इट, आप उड़ा दीजिए. उसमें क्या है, सिंस यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी बैंक निफ्टी, सो यू द ट्रेड विच यू आर फोकस्ड ऑन नाउ यू कैन, दूसरा जो कॉल वाला है उसको नीचे रख के, सो दैट योर आईज शुड बी ऑन दिस. क्या होता है कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, एंड यू इंस्टेड ऑफ जल्दबाजी में इसको स्क्वायर ऑफ करने के इसको बाई कर लेते. दिस विद माई एक्सपीरियंस. राइट. In this stream I can tell you all these things which may sound repetitive, but that is how one learns. I mean, and for more depth you can surely as they say ki practice hard. As in sports, you need to practice. Even if you are a good bowler, it's not the case that you are just sitting and just coming on the ground and start bowling or batting. Okay. A quality player like Virat Kohli finds it tough when his form goes off.
तो that theory applies everywhere, right? तो मैं तो अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ कि कल और आज दोनों दिन ऐसे हैं कि tomorrow yesterday rather, the first half would have cracked many stop losses. Because of that, risk to reward ratio management would have got suffered. तो आपने सेकेंड हाफ में श्योरली कुछ रिकवरी करने की कोशिश की होगी कुछ ट्रेड्स में, बट देन अगर आप सुबह स्टॉप लॉसेस अपने करवा चुके हो ट्रिगर, तो इनवेरिएबली आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि you tend to get scared of and avoid that recurrence. ये fact है, there's no denial on that. Okay, so where are we right now? It's 17370 and it made a low of 17348, mind you. And right now the trade is still around 158 160 area. Okay, मैं वापस I can repeat this, the moment if this goes further down towards that 350 area and even you know breaches that, तो ये आपका 180 के ऊपर जाएगा ही जाएगा. तो आई एम प्रीटी फर्म बिकॉज इसने अपनी पकड़ बना लिया है एंड नाउ इट्स स्टडीली इनटू दैट लेवल, दैट एरिया. ओके, so keep an eye on the screen. तो टफ है, कभी कभी टफ है, कभी कभी तो बहुत ही आसान होता है. मैनी टाइम्स ऐसे भी दिन होते हैं जब समझिए एक ड्रास्टिक फॉल आ गया तो उसमें हर चीज़ गिरेगी. तो व्हेन देयर इज ए राइज, देन समझो एक ब्रेकआउट आ गया तो उसमें एक इतना स्टडी राइज मिलेगा. But there are many days like this when you are confused as to where to go and what to do. The only formula for that is you do not do excess trading. You have to do a limited attempt. You cannot do 56 मतलब 10 12 times attempting. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, slowly you just to get an idea कि देखिए this was 28 a while ago, now it is 22, so more negative sides the stocks are going, है ना. सिंपल है. यहाँ पे आप देखिए देर इज नो रिवर्सल फ्रॉम द फ्यूचर्स. वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इवन नॉट वी एंटायर वर्ल्ड, कि व्हाट यूएस मार्केट्स या यूएस फ्यूचर्स विल डू. बहुत इम्प्लीकेशन उसका होता है हमारी मार्केट पे. ओनली थिंग इज ब्रेंट क्रूड एट 94, and the more it goes down the better for Indian economy, and it will surely help the economy because that is the single largest thing which we have to buy from our basket. Okay, 75 70 75 is the ideal area where Brent crude uh, suits Indian market. फाइन. तो देखिए एक 17,400 का पुट का अगर ग्राफ देखने की कोशिश करोगे तो देखिए इट्स वेरी मच इन दैट रेंज ओनली, इट्स नॉट मूविंग अबव दैट. काफ़ी देर से वहीं पर है. इट्स लाइक मोर देन 10 12 मिनट्स नाउ. दैट मीन्स अगर ये वहाँ तक है तो इसका मतलब है कि निफ्टी भी जो है इट इज़ very evenly poising itself and holding pretty well around 17,350 area. Okay, it has taken a support in this area, whereas option chain is clearly suggesting कि that doesn't have much of a support. So देखिए 17,350 में you got 13.5 lakhs open interest support area है. Put writers are well placed here, so they are acting as some sort of a support
so that it doesn't fall further. But you lost 17,400, and to gain it, well, you need to, as you can see, there are around what, how many, 46 lakhs कॉल राइटर. तो यानी आसान शब्दों में 17,400 के ऊपर तगड़ा रेजिस्टेंस आ चुका है यार. तो ये चीज़ें यू अंडरस्टैंड द ओवर चेन डेटा मोटा मोटा यही देखना है इसमें, बिकॉज यू सी देयर आर ओनली फ्यू कॉलम्स, वन इज एलटीटी, वन इज वॉल्यूम, ओआई, स्ट्राइक, एंड द सेम फॉर द पुट एंड कॉल. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेटा. बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है इसमें. You have to just self-analyze. Weekly chart है ये, weekly basis we are discussing this, okay? तो अभी तक भी कोई रिवर्सल के चांसेस दिख नहीं रहे हैं, एंड बहुत कम अपॉर्चुनिटी है. इट्स लाइक लिमिटेड काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी आई, जो अभी दोपहर को थोड़ा सा गिरावट में आई. कोई बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है मार्केट, ये भी फैक्ट है. दिस आल्सो हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड, बिकॉज द फॉल इन द यूएस मार्केट इज आल्सो नॉट दैट स्टीप की वो हमारी मार्केट को भी साथ में खींच ले, राइट? You can see. तो अभी आप देख रहे हैं, अगेन देखो रिवर्सल हो गया यहाँ पे. सो आई वाज अबाउट टू डिस्कस इट कि नथिंग इज हैपनिंग नाउ अराउंड सेम पीरियड. yesterday also there was reversals, and around same period now also it is happening. So very fast recovery. ये देखिए, you can see it's happening now, but in case of the trade which I suggested, that it has done its little of job. Now what is happening here is in all action is shifted to 17,500 call trade, okay? It is just moved, bumped up just like that. It may be more stronger. देखिए ऐसे ही है ये, दो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, बट देन व्हाट ट्रांसफॉर्म्स ये जो चेंजेस हैं कहना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे यू नेवर नो, बिकॉज इसमें पोजीशनिंग बहुत होती है. सडनली सपोज अगर मैं फटाफट बात करता हूँ, निफ्टी में किसी भी इनमें से किसने एक में अचानक यहाँ पे कोई बाइंग आई है, किसी ना किसी एक में आई है, बिकॉज इनकी कॉम्पोजिशन पे ही इंडेक्स है. इन्हीं स्टॉक में कोई ना कोई बाइंग हुई है सडन, जिसकी वजह से वो अपसाइड मूव आया, और कोई वजह से नहीं आया, राइट? तो ओआई की डेटा को या आप देखो ध्यान से,
वापस, तो वहाँ पे कोई, और ये इतने सडन आते हैं, इतने अब्रप्ट आते हैं मूव्स की, वो आप उसको नहीं आप पकड़ सकते, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। फाइन। तो इट्स क्या हो रहा है यहाँ, सारा एक्सरसाइज टू रीगेन दैट दिस लेवल, दिस वन, दिस वन। तो इनफैक्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, कोशिश यही हो रही है निफ्टी की कि बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। उसका लो भी आप देख लीजिए 17350, तो वो एरिया इसने सपोर्ट के रूप में अपने आप को वहाँ पे कंटेन किया है। Wait and watch now. I don't see any further opportunity because इस समय it's difficult. If you buy a call trade, will it do the same as the put trade did? It would be pretty risky because यहाँ पे तो OI buildup is around 46.5 lakhs. तो ऑल ऑफ ए सडन इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, और क्या वो कंटेन हो पाएगा? तो लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स आर देयर। और इज देयर एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन यूएस फ्यूचर? थोड़ा बहुत हुआ है, लिटिल ऑफ, नॉट ज़्यादा। ये सब देखना पड़ता है साइमल्टेनियसली। यहाँ पे अगर पूरी ग्रीनरी आ गई तो यू नेवर नो। सेंटीमेंट, आई होप आप प्लीज लर्न फ्रॉम दिस लाइव स्ट्रीमिंग, and to certain extent you will get an idea कि क्या करना है। तो देखो यहीं पे it's revolving around that area, why? Because this is a open interest area nearing 17400, where decisive call writing is being done। तो मोटी बात इसको और आसान शब्दों में, 17400 is a critical area of support and resistance for Nifty today, and still I would say that if you see this data of index contributor, तो वहाँ पे आपके सामने 22 are green and 28 are down। Only thing is on the greener side, you have got NP and ICICI, which carry good amount of weightage along with HUL and ITC. They feature in the top 10 among the highest weightage carrying stocks. Rest all are on the other side. तो उनमें बदलाव कुछ आया है या यहीं पे से अभी देखिए that index is basically let me explain you. I'm just recollecting that word. यस, इंडेक्स एक्चुअली इज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या कि स्टॉक्स लिया है, तो अगर वो स्टॉक्स डायरेक्शन में ना गए तो उसके लॉस को कवर अप करने के लिए आपने इंडेक्स को ले लिया था आपने। इट्स लाइक दैट। अगर कोई ट्रेड को बाई किया तो इधर एक पुट ले ली, समथिंग लाइक दैट। ओके। और राइटिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, वहाँ यू टेंड टू शॉर्ट द कॉल्स, और ज़्यादा करके यही देखा गया है पुराने डेटा में कि a call writer or a put writer, anybody who's shorting the trade, which cost you as equal as future, tend to earn, but then it requires hell lot of money. Okay, it requires hell lot of money, but success ratio has been more with them. So there's various points. There is either a put writer or a call writer. ये open interest का concept सिंपल एंड स्ट्रेट इतना ही है। तो ज़्यादा कोई डेप्थ नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना जितना स्ट्राइक प्राइस की ज़्यादा रहेगा, दैट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, लाइक 17500 एज अराउंड 71 लाख
open interest. So to cross that means a bigger, shorter, what do you call it, short covering needs to be done. Otherwise वो नहीं होगा. Nifty is struggling to regain its 17,400 area. तो आप बिल्कुल लाइव कमेंट्री में I hope you are able to understand because one index at a time नहीं हो पाएगा. I can't simultaneously check out on Bank Nifty. Bank Nifty का केस क्लियर दिख रहा है without even opening anything कि 38,000 is holding very strongly and not allowing banks to move on the upper side. Okay, बट नीचे की तरफ उसका सपोर्ट मेंटेन वही है 37,750. दैट फर्स्ट सपोर्ट. लाइक नाउ वी आर वेरी क्लियर कि फॉर टुडे निफ्टी हैज मैनेज टू somehow not fall below 17,350 एरिया. जबकि वो कोई बड़ा सपोर्ट एरिया ऐसा कुछ नहीं था. आई डोंट नो व्हाई इट होल्डेड इटसेल्फ देयर ओनली. तो वो मेरे जो नहीं मुझे आइडिया, आई से इट वेरी ओपन. 50 minutes we are in stream. Please subscribe this channel and need your support and press the bell icon so that you never miss any kind of video or live streaming. And trust me, you will only gain something out from this channel. It's not same as any other kind of channel. Yeah, but they complicate things by showing so many types of data or charts. I keep it very simple. 1 मिनट का मैंने यहाँ पे लगाया है. That's all. कैंडल स्टिक पैटर्न वाला सिंपल है. कैनेची कैंडल है ये. बैंक निफ्टी का भी लगाया, ये भी लगाया. उसके साथ जो मैंने दो चीज़ें लगाई हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है जो आपको हेल्पफुल होनी चाहिए. इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स, दे आर मोर देन एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. And the heat map of futures further gives you an overall picture. We are now 52 minutes in this stream. क्या होता है कभी 3 बजे भी समथिंग हैपन्स. तो ऐसा होता है बिकॉज आई सीन ओवर मैनी अ टाइम 3 से 3 बज के 10 मिनट के अंदर अंदर देयर इज सम सडन swing happening on either side. तो we just wanted to see that. आप 3-10 से तो पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट. उसके बाद तो द repositioning for the next day whether you wish to carry it or not is being done. So let's see what happens. Another 4 minutes to go. तो अगर सीरीज में we started on the right note but let's see where we are in other series. तो ये भी आपके लिए बड़ा जरूरी है. तो you can write just simply Nifty 50 ऐसे in investing.com और वहाँ पे you can see the historical data. यहाँ पे हमारा जो अगस्त मंथ था कब स्टार्ट हुआ था. टुडे इज 5th एंड we 29th. तो यहाँ पे हम डालेंगे 29th. So we opened around 17,158. Okay, and we are nearing 74. तो फिलहाल तो we are pretty much green only. ठीक है ना. ये आपको पता लग गया कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इस नए अगस्त सीरीज की. जस्ट टू शो यू हाउ इट इज डन, आई जस्ट शो यू. ओके,
You can do it just for your own reference कि where do we stand in this month. एक instantly आपके दिमाग में आता नहीं है तो जैसे मैंने आपको बोला around 3 o'clock some action is going to happen and just is happening in front of you. This is all experience. Again Nifty started falling. देख रहे हो? Never miss this areas. ये देखिए 3 बजे के आसपास भी something does happen. मैंने आपको कहा था now whether it hold itself it's 385. तो देखिए ये यही वो मूव है इनको ही आपने एक ये प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे फॉर ए वेरी रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम यू विल योरसेल्फ गेट ए ग्रिप अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाओ that's what I say and once you get that understanding I'm telling you there are so many people who earn so much from this market because they get that habit of watching and understanding the data. 149 is 17400 put again. तो लोअर लो इसने मारा भी तो कितना मारा 130 के नीचे नहीं गया ये देखिए ये क्लटर जो है दिस कैन बी एक्टेड एज अ सपोर्ट एरिया फॉर दिस ओके लगभग वही है ये आपका चार्ट बेस अगर आपको देखना है 1 मिनट में ही पता लग जाता है कहाँ पे जाके वो रुक सकता है वहाँ पे जस्ट एकदम अचानक नहीं गिरेगा दैट्स योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम वेयर इट इज अनेबल टू मूव अप जैसे यहाँ पे 160 के ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम आ रहा है अगर ये 160 तोड़ेगा आई एम वेरी श्योर दिस विल जैसे मैंने बोला ही है अगर ये 160 तोड़ता है तो डेफिनेटली देन इट मूव्स टुवर्ड्स 180 एरिया अब 3 बज चुके हैं तो जो इसने अपना डे लो बनाया है वापस तो वहाँ तक आया नहीं है ये चार्ट में देख लो ये जो डे लो इसने बनाया था लगभग 2:30 बजे के आसपास का उसको तो तोड़ा नहीं है वापस ये देखिए यहाँ से इसकी ये सपोर्ट बनना शुरू हो गई है नीचे आए हैं यहाँ से फिर ऊपर नीचे आए हैं तो ये इसकी होगी सपोर्ट सिंपल और ऊपर में आप देख सकते हैं इसमें कि 17,400 के ऊपर नहीं जा पा रहा है राइट देखिए नाउ इट अगेन देखो वॉलेटिलिटी नाउ इट्स द अदर वे इट्स फाइनली क्रॉसिंग 17,400 नाउ देखो ये जब ये इस तरह का सडन लेवल बड़ी देर बाद तोड़े तो आपको कॉल का ट्रेड की तरफ तुरंत देखना चाहिए कि क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ है और इसका जो सपोर्ट है वो अगर सडनली टूट जाए तो वो डबल कंफर्मेशन है ये समझ जाओ आप अगेन एंड अगेन यू वॉच व्हाट इज दैट जस्ट नाउ मे बी यू विल गेट सम आइडिया सम क्लू इन दैट तो कोशिश बड़ी क्लियर दिख रही है कि निफ्टी वांट्स टू बी above 17,400 area that's what is so this is how you tend to make Nifty money इस समय there's no point in taking the trade because you're nearing the closure of the day auto closing auto squaring off also happens by 3:20 I think for the day but generally you buy in normal only instead of MIS still you can close it clearly 17,400 level ये देखिए 17,400 को इसने रिगेन किया है आई थिंक वी स्टे अबाउट दैट ओनली अब इसके नीचे गिरने के चांस नहीं है तो दिस विल बी ऐसा होता है तो यू मूव टुवर्ड्स द एट द मनी और लिटिल आउट ऑफ द मनी ट्रेड की तरफ यू शुड ऑलवेज कीप पुट एंड कॉल ट्रेड्स वन आफ्टर अनदर
based on the maximum volume areas, volume reflecting in their strike prices. हाँ, इन्हीं में स्ट्राइक प्राइसेस में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आती है। मैं देखता हूँ, अगर ऑप्शन चेन अभी खोल के दिखा सकता हूँ। Yes, अभी देखो, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये देखो 17,500 पे ये जो फिगर है, आई तक ये देखो 1046, दिस वन 1047 पॉइंट समथिंग, सो दिस स्टैंड्स द हाईएस्ट, इसलिए कॉल के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया। एंड 17,400 पुट की तरफ देखिए 1053, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम गेनर, यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उसको आप पकड़ोगे तो मूव्स भी उधर ही आपको दिखेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस कि हाउ एंड व्हाई आई ओनली शॉर्टलिस्टेड दीज टू स्ट्राइक्स, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप है प्रोसेस, telling you with my own conviction, and that worked in the past, that's why I am sharing it. तो देखिए उसी का जो इम्पैक्ट आएगा वो कॉल ट्रेड की जो है उसके ऊपर आएगा, कॉल ट्रेड पे। तो कोशिश क्या हो रही है यहाँ पर, somehow nifty sustain itself from above 17,400 levels, because then the next only what do you call resistance area stands at 17,500, okay। निफ्टी में तो हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है ही, बट बड़ा वाला जो है वो अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा है 17,500 पे है, उसके बाद तो नीचे उतना नहीं है, सीधा पे 17,600 आता है, बट मोटी बात एज पर द ऑप्शन चाहिए, ओके। इवन रिलायंस जो है, अब इस सबको देख के ऐसा लगता है जैसे अचानक 2 दिन से जो इसकी वीकनेस है, ये शायद जब तक ये ठीक नहीं होती तो निफ्टी के लिए दिक्कत है। इन लेवल्स के ऊपर अड़चन तो आनी ही थी, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ से 1300 पॉइंट दूर तो लाइफ हाई पे निफ्टी है, तो रिकवरी तो निफ्टी ने करी है। कहाँ वो 1500 15,000 के आसपास आ गए थे हम लोग, 15,200 या सब। उस समय ऐसा लग रहा था कि 13,000 की तरफ जा रहे हैं, बट ग्रेजुअली it picked up. And mind you, in spite of geopolitical tension, Indian market is still performing much better. ये आप मान के चलना, आपका अगस्त सीरीज भी शुरू हो गया, उसका पहला हफ्ता भी चला गया है, फिर भी आप पूरा जो गेन आपने अगस्त में लिया है, जरा भी गेन गवाया नहीं है। इसको बहुत सिंप्लीफाई वे से समझा करो, जो मैंने यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा से दिखाया, राइट। So I think comprehensively we have seen two straight sessions today. One was the first hour, and this one, well, very frankly, कल से भी ज़्यादा आज टफ दिन रहा for index trader. Hardly an opportunity came which could have been termed as a straight earning opportunity. And I am talking specifically on Nifty. ऑल्दो बैंक निफ्टी के केस में हम जरूर कह सकते हैं कि श्योरली सुबह बाई साइड में इसने अपॉर्चुनिटी लोगों को दी है, बट आई वाज मोर इनटू निफ्टी बिकॉज मेरा एक ये है कि वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स इज दैट बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं होती इजीली, वो बहुत स्टीप फॉल एंड राइज करता है उसमें, तो वो आपका छोटा स्टॉप लॉस को खा जाता है इन सिंपल टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जब मान लीजिए 38,000 पे गया तो सीधा वहाँ से 37,830, तो ये जब हुआ भी होगा, देखिए 10 बजे और 10 बज के 8 मिनट, मतलब 10 मिनट में 150 पॉइंट गए, तो ये इतनी तेजी से ऐसे सब होता है, तो उसमें आपके एस एल बहुत कटते हैं, और बिना एस एल के बैंक निफ्टी में तो और भी ज़्यादा खतरा है लेने में। यहाँ पे आप देख रहे हो पीक आउट हो रहा है, लेकिन उसके पहले वो देखिए ना कितने बार उसने बम्प्स मारे हैं, इतना इट्स नॉट दैट इजी। अब देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए 10 बज के 30 मिनट में फिर गिर जाता है वो,
लगभग आपका कितना गिरता है वो भी बता देता हूँ। ऑलमोस्ट फिर 100 पॉइंट गिर जाता है। तो ये 100 150 पॉइंट इसका 15-15 मिनट के अंदर। और यहाँ पे तो बाप रे, ये जो गिरावट आई थी 10:03 से 10:07, यानी 5 मिनट के अंदर ही ये 150 पॉइंट गिरा। यहाँ 10 मिनट के अंदर 130, 15-20 मिनट के अंदर, तो बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ आप देखिए लास्ट 10:50 से 11 मिनट, यानी 11 बजे, सॉरी, तो 11:05, 15 मिनट में ये कहाँ से कहाँ गया। 9:52 रफली। हाँ, 150 पॉइंट। तो आप वॉलेटिलिटी तो चेक करो यहाँ पे इसकी, कैसे आप उसको ये करोगे एड्रेस। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। वेल, बात करते करते इट जस्ट कुडंट गेन इटसेल्फ, मतलब रीगेन दैट लेवल, एंड इट फेल बैक टू। मैं वापस बिफोर आई, आप कभी भी देखो रिलायंस, एच डी एफ सी ग्रुप, एंड देन दिस कोटक, देर आर सर्टन। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ निफ्टी। ये निफ्टी वेटेज, ये जो है ना, इसको आप हमेशा स्क्रीन पे रखो, क्योंकि याद जरूरी नहीं रहे आपको। पहले तो फिनांस, आईटी, ऑयल, एफएमसीजी और सेक्टर वाइज आप देख लो। इनसे आपको पता लगेगा कि 70% ये सेक्टर है, इनके ग्रीन होने से ओवरऑल वीकनेस या अपसाइड का आपको पता लगेगा। दूसरा, आपने ये 10 कंपनी एटलीस्ट एक दो, हाँ यहाँ पे तो 10 ही है, वैसे 10 ऑब्वियसली 50 है, बट ये 10 बहुत मेन है। तो इनमें से जो टॉप की 5-6 में आप देखिए, आईसीआईसीआई इज ऑन अ ग्रीनर साइड, इन्फी इज ऑन अ ग्रीनर साइड इफ यू सी, बट आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक, दे आर ऑल ऑन द रेड साइड। ओके, आखिरी आखिरी में बाद में ये सब चेंजेस हुए हैं, जिसमें आईटीसी इज कम ऑन द ग्रीन साइड, एचयूएल इज कम ऑन द ग्रीन साइड, राइट। तो ये आपको इससे एक आइडिया लगे, गारंटी कुछ नहीं होती, सिर्फ एक बेसिक आइडिया लगता है कभी कोई। और दूसरा, जैसे लगातार कुछ हो नहीं रहा सारा दिन, तो बेटर टू अवॉइड। हर दिन ट्रेड करना किसने बोला है। किसी दिन आप सिर्फ ऑब्जर्व करके भी तो रह सकते हो। और क्योंकि इंडेक्स ट्रेडर जो है वो, उसके पास थोड़ा सा फंड इशू होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फिर हर कोई जाता नहीं है। सो दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड माई स्ट्रीम। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। दिस लाइव स्ट्रीम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय Dhan app, and the screen which you are seeing, where all the trades are getting discussed, is of Dhan, and you can very well get yourself an account opened through them with less than 24 hours time period, and account opening is absolutely free of cost. Okay, I've given the links in my description. Do keep watching my streams and videos. Please give your love to this channel, subscribe, like, and press the bell icon. And with that, I wish you a very, very happy weekend, and may you enjoy your weekend. See you all next week. Till then, bye bye and take care. Please give your love to